जिगर भाई कल फिर ब्रिस्बेन सोल्ड आउट था। पर्थ वालों को बता दो आप आ रहे हो। बस पर्थ वाले वी आर जस्ट कमिंग। आई थिंक दैट विल बी प्रीटी क्विकली सोल्ड आउट टू। जल्दी सोल्ड आउट है भाई, क्योंकि ब्रिस्बेन भी हमने 3 जून को शुरू करा था एंड वी सोल्ड आउट लाइक 3 दिन पहले 19 तारीख से 16 तारीख, सो अबाउट 13 डेज। उसमें भी हमने ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं डाला, मतलब नहीं डाला। चलो एनीवेज, सो या पर्थ विल सी यू सून। ओके सो कल ब्रिस्बेन वाले इवेंट थे, ऑलमोस्ट 40 प्लस बंदे सीगे एंड मैन देयर वाज सो मेनी questions. I think Deep said we answered bro 141 questions. Oh, really? Yeah. We answered pretty much 141 question ਆਪਾਂ close to answer ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, so you can expect that as well. So 141 questions ਦੇ ਅਗਰ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ, see you in Perth. We had amazing line of questioning. Obviously making sure कि भाई अगर broker, if someone's got a question for a broker, we had a broker there. Jigar bhai was there for the accountant. If someone had a question for a builder, he was there. So it's just not me giving you suggestions कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है. It's about a bunch of people who can actually really help you really get to the next stage जिथे ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ. ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆਫਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ it's very hard for you to say no to. ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ. They were literally, I was looking at their faces, they were like, what? We've never done this, how the hell? So you're going to get an offer that you perhaps can't say no to. See you soon. मेरे को पता है क्या कहता मोदी जी लग रहे हो आप. कह रहा है, बोल नहीं रहा था, कह रहा है, कहता हमेशा एकदम से यार तेरे को रिकॉर्ड करना चाहिए था वो, तेरे को ना उस कल रिकॉर्ड करना चाहिए था. You missed it. अगर तू लेके चलती मज़ा आता. पता क्या हुआ, जैसे मैं घुसा वो लड़का था उसका जिसके पान वाले का था, तो भाई क्या हुआ कि जैसे मैं घुसा वो देख रहा मेरे को, बड़ी देर आराम से देख रहा. कह रहा भाई एक बात बोलूँ, मैं बोल. कह रहा भाई मोदी जी को मात दो गया. मैं मोदी, मैं कहा भाई कोई हमारा ऐसा कोई है ही नहीं है कि पॉलिटिक्स वगैरह, क्योंकि हमने पासपोर्ट छोड़ना नहीं है भाई, पासपोर्ट छोड़ना पड़ेगा, वो मेन चीज़ है, पासपोर्ट नहीं छोड़ना भाई. पॉलिटिक्स चाहे नहीं करेंगे, पासपोर्ट नहीं छोड़ सकते, क्या करें. चलिए अपने को ऐसा सोच लगा कि जगह जगह के अलग मोदी जी होते हैं. हाँ ये हो सकता है. यहाँ क्या बोल. कपिल भाई फिर कल ब्रिस्बेन सोल्ड आउट था, आज गोल्ड कोस्ट है. करेक्ट. चलें फिर पर्थ, चलो. चलें. एब्सोल्युटली. कैसा रहा आपका? ट्रिप वाज गुड. अच्छा रहा कल इवेंट हमारा ब्रिस्बेन एंड आज गोल्ड कोस्ट, सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. गोल्ड कोस्ट में हमने टिकट्स कम ही रखी थी भाई. हाँ आई नो. मतलब एक दो टिकट बचे, बाकी सब सोल्ड आउट. आई नो, सो दैट इज अ गुड थिंग. इट्स अ गुड थिंग. वी कैन स्पेंड मोर टाइम विद आवर. पर्थ वालों को बता दो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आपसे. Lot of fun, excitement, questions, Q&As, knowledge, and let's get to know each other. Good. Let's go. Thank you. दीप वाज द वन जिसने 141 क्वेश्चन गिने हैं. सो दीप ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਕਿ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ. ਐਂਡ ਪਰਥ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਯੈਸ ਆਪਾਂ ਪਰਥ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ. ਕੱਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਾਊਂਡ 141 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਨ ਟੋਟਲ. ਸੋ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ask a couple of people ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, are you happy, are you satisfied? So basically they are satisfied with the answers. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਜਸਮੀਤ SPI ਜੀ. ਦੈਟਸ ਆਲ. ਥੈਂਕ ਯੂ. कमल जी कितना रहा फिर कल? बहुत अच्छा. कल बहुत लोगों के बड़े सॉफ्ट स्पॉट्स हमने हिट किए हैं और बहुत अच्छे से हिट किए हैं. दे गॉट ऑल द आंसर्स एंड दे वर हैप्पी. आई गॉट लॉट ऑफ गुड फीडबैक एट द एंड ऑफ द इवेंट. There was another single mother like me. She was very worried. She spoke to me in person. So yeah, I would say it was a success. Where Jasmeet is and where SPIG team is, it's always energetic. And yesterday was a live example. People were full on asking questions. They were getting appropriate answers as well. So the energy, the give and take of energy and the question and answer was bang on, I would say. So even we, SPIG team, were not aware of the hot offer which Jasmeet offered yesterday. We were amazed, how did that happen? People took leverage of that, and I'm amazed to see the turn up, you know, the turnaround which has happened just because of that offer. Plus, that was a backup
after the live Q&A, which was a hit anyway, and the offer was double hit, I would say. It has to be fine back. थोड़ा सा आराम में right? Very impatient, very aggressive. If you're in the business, तो लंबा नहीं करना, हमारा जो काम होगा आपको दिखाने का बहुत कम होगा, आधे और ये for 491, and we bought this one. That was the only land available where we can save stamp duty. But the people, they told me that you have got only 12 months, either buy something or that $16,000 will be completely wasted. That's why we bought that land. देखो स्ट्रेटेजिकली, जस्ट टू लेट यू नो, स्ट्रेटेजिकली अगर मैं करता तो मैं शायद यही करता. अगर मेरे पास पैसे नहीं होते, अब आई डोंट नो आपकी सिचुएशन तब कहाँ थी. ओके, दैट्स फाइन. सो आई वांट टू लीव दैट फॉर अ मिनट, क्योंकि वो थोड़ी पर्सनल है. सो आई वांट टू लीव दैट फॉर अ मिनट. स्टैम्प ड्यूटी एक नशा है जो आपको फंसाने के लिए दिया जाता है. गरीब लोग करते हैं. हर घर पे जब कोई नया घर बनता है तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पास 2.5 लाख का टैक्स उनकी जेब में जाता है. $250,000 का. कैन यू अंडरस्टैंड? समझ आ रही है? गुड. जस्ट वांट टू मेक श्योर, या वी आर द वंस. बट सच अ ग्रेट बिजनेस मॉडल. भाई मेरे को भी सरकार बनाओ जल्दी, मैं भी 90% का लूँ. हाँ जी. हाँ, bet against the top 4 banks of Australia, the highest record in history, 11 billion or something. They're betting against, right? Shorting against these big four. the housing market Against or against the banking. Cool. big four banks. Sure. Now, can you tell me why your strategy is not going to be affected by that? That's a great question, bro. But use that money wisely. I'm telling you, people in Brisbane and Gold Coast, guys, you have been very lucky for the last few years, right? If you don't take advantage of this, When like property, I'll explain you with the scenario. हाँ जी. When we buy $1 million property, we are attaining 70,000 in rents at 7% a year. Once the property start increasing in equity, the person wants to get. जी. So is it like, you know, right execution, because I'm waiting. दो चीज़ें हैं सिर्फ, या तो आपकी इनकम बढ़े या तो आपका लोन नीचे जाए. That's it. और कोई तरीका नहीं है आपके पास. हाँ जी भाई, क्या हाल है जी? सत श्री अकाल जी, ठीक ठाक हो? ਉਹ ਕਮਲ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ. ਉਹ ਬ్రో ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ. ਤੇ ਕਮਲ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਸੇ ਕਾ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ. ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੀ ਭਾਈ. ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਚੰਗਾ ਭਾਈ. हाँ जी, जरूर इकट्ठे बैठे कॉफी दे. चंगा भाई, सत श्री अकाल. ओके ब्रो. How did you go? Session was really valuable. Very informative. I learned personally a lot. Cool. As you know, I enjoy your company. Thank you. Thank you. And the information you gave, you wouldn't get anywhere else. Simple as that. Thank you. You want to be successful, you want to be put in the words people think millionaire, follow him. Simple. I'll say any day of the week. That's very heavy, but thank you, bro. I appreciate it, man. I really do. No, I'm saying it from bottom of my heart. I learned personally a lot from him. I'll say that here, free advice to everyone, just start freaking following him. Whatever your goal is. I know nothing, but I can see myself looking at the camera, I'm not shying, follow him. Thank you, bro. I appreciate it. Thank you. Really appreciate it. I'm saying from Thank bottom of my heart. Bro, thank you. I really mean it. I wanted to get your feedback because, yeah, it was very I'll important. tell them one more thing. Yeah, sure. करना तो है नहीं. That's true. No, 90% of the people. नहीं है नहीं. सच गल है, इमोशनस लैके बैठे अंदर. मेरा गोल क्लीयर है, मेरे हालात नहीं है. ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ. फॉलो कर लो, कुछ लर्न कर लो.
90 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਲਓ 21 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਹੈਬਿਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 2 pages a day Anything to start with, bro. Like 1 page a day. That's 60 fine. pages a month Thank ਇਹ you. ਨਾ We appreciate your feedback, bro. Thank you. deep breath ਕਰ ਲਓ Thank you, bro. Appreciate it. Thank you. ਇਹ ਦਿਲੋਂ Thank you for coming all the way from Sydney to Gold Coast. ਦਿਲੋਂ ਗਿਆ Thank you, bro. No, I can feel it, bro, but we appreciate it. Thank you. ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ Thank you, bro. Mr. Podcaster. मैं सर को वैसे ही फॉलो करूँ Kamal, obviously you ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ help ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ to buy something. I don't want to mention much. How's the experience been so far? Experience has been good. It's very transparent and it's very smooth. Transparent ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਝ transparent ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਬਈ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, you know what is how to. No, it's been a good experience right from the start. And ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੱਚ में रह गए हैं, so we are working on a very very informal basis also. It's not कि भी जी. professionalism is still there, but transparency helps. Bro, we're so transparent. We just, we do a lot of things that most of the people don't want us to do. Thank you, Kamal bhai. Thank you so much for coming. I'm really glad that you came, bro. I'm really glad. Yeah, I will see you soon. Thank you. Had fun? Very much. Lot of Fun नहीं सिर्फ information भी डालते हैं. information ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ we for me as I want to get into property investment, little nuggets they have about from tax agents, mortgage brokers, everybody's is different. So I gained a lot of knowledge and a lot of things to think about now. So thank you. It's good. Thank you so much. I'm glad you had fun. We had fun yesterday as well. Thank you, bro. Thank you. Thank you, man. Thank you. That's about it. It's about time for us to get some dinner. It's 10:10. See you, Perth.